Okay, good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, sir. Yes. Yeah. Is my screen visible to you all? Is it Yes, visible? sir. Is my screen visible to you? Okay. Yes. So in the last class, we have discussed something which is number system. Anybody has any problem? Should I No, sir. I continue? start the recording, but it is already. The recording is not yet started. Yeah, you are recording this meeting. हाँ हो गया ना? हाँ हो गया सर. Okay. Okay. Yeah. So yeah. So in the previous class, we have discussed something called as the unsigned number and signed number. Okay. So there are uh, three ways of representing a signed numbers. Okay. So पहला signed number है, फिर ones complement है, फिर twos complement है. Out of that, the signed number system and the ones complement number system both are completely flawed number system because it introduces a new term which is called as minus zero, which is illegal in mathematics. That is why twos complement is the best method by which you can represent a signed numbers. Okay, so अगर negative में कोई भी number है उसको आप twos complement से represent कर सकते हो. Is that clear? ये discussion clear हो चुका है आपको? Yes, sir. Yeah. So we have seen the different तो conversion. आवाज थोड़ी कम आ रही है सर आपकी. Okay, am I audible now? Am I Yes, audible? sir. Just a second, huh? Just a second. I need to ask the other faculty to kindly ask them to shut down a little bit. Yeah, am I audible now? Yes, sir. Yeah, fine. Was this discussion of the number system clear to you all? Anybody has any problem in this? Anybody has any problem? No, sir. Okay. So I'll just No, sir. quickly erase नहीं मैं erase नहीं करता हूँ रहने देता हूँ इसी. Yeah. So अगर मैं आपको कोई भी एक नंबर बोलूँ, can you do the conversion? So let's say if I say how to represent 13, can you tell me the representation of 13 is? Using unsigned numbers, okay? Using unsigned number. Tell me what is 13? 1101. 1101. So we don't have to worry about the MSB of this number. It one है या zero है उससे कुछ हमें लेना नहीं. Magnitude is nothing but 13. वो 13 होना चाहिए, okay? So 13 is nothing but 1101 in the unsigned number. अगर ये signed number representation में अगर मुझे 13 represent कराना है तो कैसे represent करूँगा? How to represent 13 in signed number representation? Come on, tell me. Signed number representation मतलब twos Zero complement. और ऐसा है. मतलब एक जीरो आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, ओके, बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव नंबर, सो यू नीड टू ऐड 0 1101. नाउ दिस इज नथिंग बट योर मैग्नीट्यूड एंड दिस इज नथिंग बट योर साइन. ओके, so that means this is 13, and if I say what is minus 13, use 2's complement to get the minus 13. What is the 2's complement of minus 13? So copy till you get the first one. After just that, flip the bit, so this will become 1, this will become 0 0 1. Correct? Is this clear? Yes, sir. Yeah. So any number can be written down in positive number or can be written down in negative form using the 2's complement. And in computer, anywhere if you want to perform computing, be it a calculator, be it a processor, be it any device that you can think of, negative number is always stored in the form of 2's complement. Is that clear? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So after this, just tell me what are the range of unsigned number and signed number. Tell me the range of it. Okay, हम पहले 3 bit की बात करेंगे and then we'll try to increase our range. Okay, so for 3 bit number, what would be the range of unsigned number? Unsigned number कहाँ से कहाँ तक vary कर सकता है? 0 to 7. It is 7. 0 to 7. Is this clear? Yes, और sir. Yes, अगर sir. 3 bit का signed number होगा तो वो कहाँ से कहाँ तक vary कर सकता है? Minus 3 to minus 0, 0 to 3. -4 से लेके -3, सॉरी -4 से लेके -1 नेगेटिव साइड में, और पॉजिटिव में 0 to 0 to 3. 3. बराबर ना? -4 से ही Yes, स्टार्ट होगा sir. ना? अगर आप देखोगे यहाँ पे, it started from -4, it has gone to -1, then 0 to 3.
सो आप यहाँ से रख सकते हो -4 -3 -2 -1 देन 0 1 2 3 बराबर. इज दैट क्लियर? Yes, sir. या सो यहाँ पे भी यूनिक अगर सिंबल देखा जाए तो 8 यूनिक सिंबल्स हैं. यहाँ पे अगर आप देखो तो यूनिक सिंबल्स क्या है, वो भी 8 ही है. 4 इन द नेगेटिव साइड, 4 इन द पॉजिटिव साइड. राइट राइट बराबर ना? हाँ सर. Yes, sir. नाउ अगर मैंने आपको बोला 8 बिट का क्या रेंज होगा, कैन यू गिव व्हाट वुड बी द 8 बिट का मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर? व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ 8 बिट अनसाइंड नंबर? 2 raised to power 8 symbols. सो विच इज इक्वल टू, अगर 8 बिट हैं अगर आपके, तो 8वां बिट अगर मैंने 0 रख दिया, दैट वुड बी द लोएस्ट नंबर, राइट? Yes, sir. Which is Yes, equal to sir. 0. And what would be the maximum number? So 1 8 1 1. 1 होने चाहिए. So And tell me one. what is 8 ones? What is 8 ones in decimal? So this is 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the Our power rate is 5, 2 to the power 256, 6, 2 to the power 7. So it is equal to not 256, it is equal to 255, I guess. 120. 255. So check करो. So this is Yes, nothing sir. but 255. 1, 2, this is 4, this is 8, 16, 32, this is 64 and this is 128. So आपको क्या करना है, हर एक This को is ऐड करना है. So 127. 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. I think it will come as 255. Yes, sir. Because it's Yeah. 128 plus 127. Yeah. The remaining, if we add, we get 127. Yeah. So is it coming as 255, everybody? Yes. So can I say the range of 8-bit number is from 0, and the maximum number that I can get out of 8-bit number is nothing but 255 in decimal? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. What about 8-bit number in case of साइन नंबर्स? साइन नंबर में पॉजिटिव नंबर क्या होगा? तो पॉजिटिव नंबर मतलब सारे के सारे 8 zeros मेरे, बराबर. Yes, sir. Yes, sir. So what is this number? What is this number? This is nothing but plus 0. Yes, sir. Looking at the MSB, Yes, sir. what is the maximum positive number? What is the maximum positive number? यानी MSB 0 होगा, बाकी सारे बिट मेरे 1 होंगे, right? Yes, sir. 127, sir. So which is nothing but 127, बराबर. So the number is nothing but 127 plus 127, correct? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So can I say in positive side the range is from 0 to plus 127? What about negative side में? What would be the Yes. range? -1 से कहाँ तक So जाएगा? -128. -128. Okay. So just जैसे हमने पहले देखा, वो -0 से 3 जा रहा था, नेगेटिव साइड में एक ज़्यादा जाएगा. तो सिमिलरली वो 127 से 0 तक जाएगा, 0 से 127, नेगेटिव साइड में -1 से एक ज़्यादा, विच इज -128. Is that clear? Yes, Is sir. that clear? Yeah. Yes, sir. Now tell me the same range in hexadecimal. Hexadecimal में same range क्या होगा? So this is 0 0 0 0 0 0 0 0. So I can club this 4 bit and make it as single 0. This also as 4 bit and make it as single 0, right? So can I say the range is from 00H to 11H, what is this number? FFH, FFH. FFH. So can I say the range in hexadecimal would be from 00H to FFH in unsigned number? Yes, sir. Yes. What about sign numbers? Sign numbers में check करो. What is this number? Positive side में 00H. And what about the last positive number? कहाँ से जाएगा? 7F. 7FH. So 00H से 7FH is the range in positive side. Negative side में क्या होगा? -01H से लेके what would be the last number after 7FH? क्या आएगा? 8F. 8F. No. 7F के बाद क्या आता है in hexadecimal? Okay. F के बाद क्या आता है in hexadecimal? 10. 10. 1F के बाद क्या आएगा? 20. 2F के बाद क्या आएगा? 30. 7F के बाद क्या आएगा? 80H, राइट ना? 19 के बाद क्या आता है डेसिमल में? 20. 29 के बाद क्या आता है? 30. 39 के बाद क्या आता है? 40. So just like that hexadecimal में F के बाद 10, 1F के बाद 20, 2F के बाद 30, 3F के बाद 40, 4F के बाद 50,
5f के बाद 60, 6f के बाद 70, 7f के बाद 80. Is that clear? Yes, sir. So in negative side, the range will be from minus 80h to minus 01h. Positive side में it is from 00h to 7fh. Is that clear? Is this range Yes, clear sir. to you? Okay. Now we'll go back to the number system. Kindly remember this range. Okay, the range is very important. Okay. We'll go to the flag register. So overflow flag. Okay, what is overflow flag? The content of overflow flag will be made as 1 if the result is out of the range. Okay, range के बाहर होगा. What is the range? The range is from minus 80h to minus 01h, then 00h to 7fh. Is that clear? Yes, sir. Okay, यानी अगर नंबर इसके बाहर का होगा, for example, let's say 55h, is it within the range or outside the range? 55h. Within the range or outside the range? Where does 55 lies? It lies within this boundary or outside the boundary? Within this boundary. Within this boundary. So 55 would be somewhere over here, right? Yes, sir. Yeah. So in that case, overflow flag will be made as 0. Okay, because it is within the range. Outside the range, just say for example 85h. Is it outside the range? Yes, sir. Yeah, 7f के Yes, बाद sir. आएगा ना. So we can say that in that case the number is overflown and hence it is overflow flag will be made as 1. Is that clear? Yes, sir. Yes, yeah? Sir. So ये जो range है वो 8 bit का number है because we are dealing with 8 bit numbers only. So इसलिए हमने 8 bit का number range यहाँ पे define किया है. 16 bit के लिए अलग range होगा जो आप निकाल सकते हो. I am pretty much sure. Yeah. So I hope overflow flag 1 कब होगा ये समझ में आ गया. अगर वो number उस range के बाहर होगा then in that case overflow flag will be made as 1. Is that clear? Yes, sir. And it is made as 0 if the result is within the range. Fine? Is that clear? Yes, sir. Yeah. The most important conclusion, kindly note it down as one of the important point. Okay, conclusion. What is the conclusion? The sign of the number is given by two flags, okay, which is overflow flag and sign flag. Fine, is this point clear? Yes, sir. Yeah. The first condition, if the overflow flag is equal to 1, then sign flag is telling false. Okay, which means if sign flag is equal to 0, अगर साइन फ्लैग 0 इसका मतलब नंबर क्या होना चाहिए था? पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन ये गलत बता रहा है. ओवरफ्लो फ्लैग अगर 1 है इसका मतलब नंबर क्या होगा? नेगेटिव. व्हिच मींस इफ द साइन फ्लैग इज इक्वल टू 0 देन द नंबर इज नेगेटिव. इज दिस क्लियर? Yes, sir. And if sign flag is equal to 0, sorry, not 0, 1, in that case the number should have been negative, but because it is saying wrong, that means the number is not negative, it is positive. Okay. Yes, sir. ये कब होगा? जब ओवरफ्लो फ्लैग 1 होगा. इन दैट केस साइन फ्लैग जो रहेगा वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है. दैट मीन्स whatever it is trying to say, that is not true. It is vice versa. It is reverse of it. Is that clear? Yes, sir. Yeah. So the second condition, if overflow flag is equal to 0, then sign flag is telling as True. true. Okay, it's telling true. True. Okay, which means if sign flag is equal to 0, then the number is Positive. positive. Okay, and if sign flag is equal to 1, then the number is Negative. negative.
Is this clear to you? Yes, sir. We'll take an example and we'll see it, okay? Yeah, so let's take a number which is 7f plus 1 2h. Try to add these number. What is the result? F plus 2 is f के बाद 1 0 1 1, right? So 1 carry 1 नीचे. 1 plus 7 8, 8 plus 1 is 9. So 91h. Do this in binary. 7 can be represented as 0 triple 1. F can be represented as 1 1 1 1. 1 can be represented as 0 0 0 1. 2 can be represented as 0 0 1 0. Is this clear? Yes, sir. Add the number. 1 plus 0 is 1. 1 plus 1 is nothing but 0 carry 1. 0 carry 1. 0 carry 1. This is 1 carry 1. 0 carry 1. 0 carry 1 and 1. Is this clear? Yes, sir. Yeah. Now looking at this, can you tell me what is carry flag, what is parity flag, what is auxiliary carry flag, what is zero flag, what is sign flag, what is overflow flag, and finally tell me the sign of the number. So come on, we'll start with carry flag. Is there a carry generated out of the MSB? No, sir. Carry is 0. Carry is 0. What about parity flag? Just check at the result. Number of ones कितने हैं? सर पैरिटी फ्लैग 0 रहेगा. Parity flag 0 होगा क्योंकि number of ones is odd or even? Odd. Odd. So Odd, sir. parity flag will be made as 0. What about auxiliary carry flag? Is the 1. carry generated out of the lower Yes, sir. neighbor to higher neighbor? Yes, sir. So, 1. so auxiliary carry flag will be made as 1. What about zero flag? Is the result 0 or non-zero? No, sir. Non-zero. So in that Sir, case, zero flag will be made as? 0 फ्लैग 0 रहेगा. Zero flag 0 Zero होगा. flag Very 0. good. What about sign flag? So 1 होएगा. 1 होगा Correct. because MSB 1 है इसलिए. MSB 1 है. What about overflow flag? Within the range or outside the range? आउटसाइड द रेंज. Outside the range. Overflow होगा number या नहीं होगा? होगा. होगा sir. तो overflow होगा, flag will be made as 1. Okay. जस्ट इन केस अगर आप सिर्फ साइन फ्लैग देखते और साइन बताते, नंबर अगर साइन फ्लैग पे 1 हुआ इसका मतलब नंबर नेगेटिव हो गया. लेकिन क्या कभी कोई दो पॉजिटिव नंबर को आप ऐड करते हो तो नंबर नेगेटिव हो सकता है? इज दैट अलाउड? No, sir. नो. सो इसके लिए इसका मतलब क्या है, हमें दोनों फ्लैग को देखना पड़ेगा. फर्स्ट चेक द कंटेंट ऑफ ओवरफ्लो फ्लैग. इफ द ओवरफ्लो फ्लैग इज 1 दैट मींस साइन जो भी बोल रहा है वो गलत बोल रहा है. साइन के हिसाब से नंबर नेगेटिव है लेकिन वो नंबर नेगेटिव नहीं होगा, क्या हो जाएगा? Positive होगा. पॉजिटिव. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Is that clear? Fine. So कोई और एग्जांपल देने की जरूरत है या इधर खत्म हो चुका है? Is this clear to you all? तो सर मतलब सर एग्जाम में मतलब हमें खाली ये ओवरफ्लो फ्लैग और साइन फ्लैग का आएगा और उसमें कोई भी वैल्यू दी होगी तो they'll just give us OF is equal to 1 and SF is equal to 0 and accordingly we have to work it out, right? Yes. So एग्जाम में जनरली एग्जाम के अंदर फ्लैग रजिस्टर का सवाल कुछ इस तरीके से पूछा जाता है. ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द फ्लैग रजिस्टर. ओके, सो दिस इज हाउ दे जनरली आस्क यू. अगर ये एक थियरी क्वेश्चन हो, ओके, और ये 10 मार्क के लिए फॉर श्योर आता है. इट इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस इन एग्जाम. ओके, अगर एमसीक्यू बेस्ड होता है, ओके, सो इन दैट केस दे वुड गिव यू समथिंग लाइक द कंटेंट ऑफ AL register is let's say 0FH. The content of BL register is 7FH. Okay, after performing an add operation between AL and BL register, tell me the content of CF flag. Okay, so CF is equal to 0, CF is equal to 1. देखो आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा, आपको चूज करना पड़ेगा. आई होप इट इज क्लियर. Yes, sir. Got it. या तो उसके साथ साइमल्टेनियसली कोई और एग्जांपल दे देंगे, जैसे कि साइन फ्लैग क्या है. तो साइन फ्लैग कैन बी 0, साइन फ्लैग कैन बी 1. देन थर्ड ऑप्शन कैरी फ्लैग इज इक्वल टू 0, साइन फ्लैग इज इक्वल टू 1. एंड फोर्थ ऑप्शन कैन बी कैरी फ्लैग इज इक्वल टू 1 एंड साइन फ्लैग इज इक्वल टू 1. सो इसमें से आपको चूज करना है कि क्या ऑप्शन है. तो आपको 0FH और 7FH को ऐड करना पड़ेगा. यू नीड टू कैलकुलेट कि हर एक फ्लैग का कंटेंट क्या होगा एंड उसके बेसिस पर आपको चूज करना पड़ेगा आपका अप्रोप्रिएट आंसर क्या है. एग्जैक्टली. Yes, sir. यस सर.
So that was like the 6th register. Okay, so हमने अब तक 6 registers देख लिए और ये सारे के सारे 6 कौन से flag थे? Status flag. All these are called as status flags. Come on, name the status flag. We have carry flag. After carry, Auxiliary flag, auxiliary carry, parity, parity के बाद parity, auxiliary के बाद auxiliary carry, zero zero के बाद flag, Sign. Flag. sign flag, sign के बाद overflow flag. overflow flag. Okay, so all these 6 are your status flag because these are changed as per the result. Result के अंदर change होगा तो status flag change होगा. Okay, so अगर इन flag के अंदर कुछ भी change करना है वो status के flag result को change करना पड़ेगा आपको. यानी कोई operation आपको perform करना पड़ेगा तब जाके result status आपका change होगा. Exactly, yeah? Yes, sir. So if you perform any operation उसके रिजल्ट के बेसिस पे आपके स्टेटस चेंज होंगे. लेकिन आगे वाले जो फ्लैग जो हम देखने जा रहे हैं विच इज द ट्रैप फ्लैग, द इंटरप्ट फ्लैग एंड द डायरेक्शन फ्लैग, दीज 3 फ्लैग्स आर समथिंग व्हिच कैन बी चेंज्ड बाय द प्रोग्रामर इटसेल्फ. ये प्रोग्रामर अपनी मर्जी से चेंज करते हैं एंड दिस विल बेसिकली चेंज द कोर्स ऑफ द कंट्रोल स्ट्रक्चर. यानी जो प्रोग्राम का जो फ्लो है उस फ्लो को इट विल हैम्पर, इट विल चेंज द फ्लो ऑफ दैट execution of the program. Is that clear? Yes, sir. So flag number 7, it is something called as trap flag. Okay, so trap flag is nothing but it is understood as TF. The content of TF is made as 1. अगर TF को 1 किया, in that case, okay, look at the wording. Okay, we the programmer do change the content of TF as 1. TF को one change करने से कुछ और होगा. अब तक क्या हो रहा था? कैरी फ्लैग चेंज हो रहा था किसकी वजह से? ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट रिजल्ट दैट यू हैव. जितने भी फ्लैग थे देखो, द जीरो फ्लैग विल बी मेड एज 1 इफ द रिजल्ट इज 0. सो रिजल्ट के चेंज होने पे जीरो फ्लैग चेंज हो रहा था. सिमिलरली साइन फ्लैग विल बी मेड एज 0 इफ द एमएसबी इज 0. ओके, मतलब रिजल्ट का एमएसबी अगर 0 हुआ तो साइन फ्लैग 0 होगा. सो दैट मीन्स एवरीथिंग इज चेंज्ड एज पर द रिजल्ट. बट राइट नाउ फ्लैग को चेंज करने से समथिंग विल हैपन. सो if TF is made as 1, if trap flag is made as 1, in that case the execution of program will happen line by line. Is that clear? अगर आप Yes, ट्रैप sir. फ्लैग को 1 करते हो तो आपकी जो एग्जीक्यूशन होती है पहले एक लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर तीसरी लाइन होगी, फिर चौथी होगी, फिर पांचवी होगी, फिर छठी होगी एंड सो ऑन. इज दैट क्लियर? Yes, sir. और अगर आप TF फ्लैग को 0 कर दे तो हु द प्रोग्रामर इफ इट चेंज TF फ्लैग एज 0, इन दैट केस द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम विल हैपन इन अ सिंगल गो. एक साथ में आपका रिजल्ट आ जाएगा. Okay, you don't have to wait for a single line to get executed. In a single execution it will execute all the lines together and will display the result. Is that clear? Yes, sir. So it is something like अगर आप C programming अगर आपने किया होगा, there is a button which you press which is called as F7. F7 press करने से क्या होता है? You basically debug a single line, right? किया है ना आप लोगों ने टर्बो C के अंदर? Yes, sir. किया है. तो अगर आप F7 दबाते तो एक लाइन एग्जीक्यूट होती है, फिर F7 दबाते तो दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होती है. वो क्यों चेक करते हैं हम लोग F7 से? ताकि आपका बिजनेस लॉजिक के अंदर अगर कुछ भी चेंज अगर आपको करना है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट बाय यूजिंग दैट डीबगिंग. द सेम थिंग इज इन 8086. आपके पास TF फ्लैग है, अगर आपको एक एक लाइन एग्जीक्यूट करके देखनी है तो आप TF फ्लैग को 1 बना दो. अगर पूरे कोई भी लाइन अगर आपको एग्जीक्यूट नहीं करनी है, पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ अगर आपको रन करना है, इन दैट केस द कंटेंट ऑफ TF फ्लैग शुड बी मेड एज 0. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay. Next is the 8th flag, which is called as the interrupt flag. Okay, so interrupt flag is represented as IF. My bad, IF. So if you change the content of interrupt flag as 0, so if interrupt flag is made as 0, in that case interrupt is enabled. Okay,
यानी आप इंटरप्ट को अलाउ कर रहे हो, यू आर अलाउइंग द इंटरप्ट टू हैपन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्ट? फॉर एग्जांपल अगर आप कोई गेम खेल रहे हो, पबजी खेल रहे हो, इफ देयर इज कॉल कम्स, द पबजी गेम विल स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू योर कॉलिंग सर्विसेज. इफ यू वांट टू अलाउ दिस, अगर आपको आपके मेन प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने के लिए इंटरप्ट को अलाउ करना है तो IF का कंटेंट आपको क्या करना पड़ेगा? 0. इज दैट क्लियर? यस सर. एंड इफ यू वांट टू डिसेबल इट, IF के कंटेंट को आपको क्या करना पड़ेगा? 1. So if interrupt flag is made as 1, in that case what will happen? Interrupt is disabled. Okay, and if it is made as 0, in that case it is enabled. अगर interrupt enable हुआ तो interrupt occur होगा, अगर disable हुआ तो interrupt won't happen. What is interrupt? It is an external event. Okay, ये external event क्या हो सकते हैं? It is something which is like call event हो सकता है. There is something like printer connect किया है तो print service आप दे सकते हो. अगर आपने कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस अगर आपने कनेक्ट किया होगा तो उस इनपुट आउटपुट डिवाइस को अगर आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी है, दैट कैन बी डन प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ इंटरप्ट फ्लैग. तो अगर इंटरप्ट फ्लैग को अगर आपने 0 कर दिया तो आपने इंटरप्ट को अलाउ कर दिया. तो वो कोई भी एक्सटर्नल इवेंट पे अगर कोई भी सर्विस अगर आपको चाहिए, वो सर्विस आप एक्सटर्नल इवेंट को प्रोवाइड कर सकते हो. अगर आपको वो उसको प्रायोरिटी नहीं देनी है, अगर आपको कंप्लीटली डिसेबल करना है, कोई भी एक्सटर्नल इवेंट आपके करंट प्रोग्राम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, in that case you should make the content of IF flag as 1. If by making IF flag as 1, you are telling the processor that the interrupt which is supposed to come, that is completely disallowed, that is completely disabled. Is that clear? Yes sir. So basically जब अभी के टाइम पे जैसे प्रो गेमिंग मोड्स करके आता है ना इन व्हाइल प्लेइंग पबजी और समथिंग, दैट यू कैन जस्ट कंप्लीटली डिसेबल एवरी नोटिफिकेशन दैट यू गेट इंक्लूडिंग अ कॉल. दैट इज वेयर IF इज 1 राइट परमानेंटली, मतलब अभी के टाइम पे. yes. So कभी अगर आपको पता होगा, जैसे कि आप लैब में जब आप बैठते हो, so during practicals they disable the pen drive का slot. You can do that, right? Going into device manager and you can disable the pen drive के slots, right? So अगर आप disable करते हो, so उस केस में you're trying to make your interrupt flag as 1. So you're trying to disallow the USB to be connected. Okay, so ये आप जानबूझ के करते हो और ये आपको करने के लिए प्रोसेसर को बताना पड़ेगा by change the content of IF flag as 1. So IF flag 1 होते ही प्रोसेसर को समझ में आ जाएगा कि अगर कोई भी पेन ड्राइव लगाने की कोशिश कर रहा है तो that pen drive cannot be readable. It cannot be allowed to read it. Is that clear? Yes sir. Yeah, so that is how the IF flag, the role of IF flag is. Okay, next is something called as ninth flag, the last flag. It is something called as the direction flag. Okay, so direction flag is nothing but it is abbreviated as DF. The short form of direction flag is DF. Okay, so DF can be 0 or 1. Okay, so DF को अगर आपने 0 किया, okay, if DF is made as 0, so where it is used, first we'll discuss that. Okay, so normally एक string है. What is string? String is nothing but it is like a collection of memory location या data, collection of data. So एक data है, दूसरा data ये है, तीसरा data ये है, चौथा data ये है, पांचवा data ये है, छठा data ये है. So let's say if you want to copy this data to some other memory location, okay, फिर अगली लोकेशन का जो डेट कॉपी है वो आप दूसरे लोकेशन पे करोगे, तीसरा लोकेशन जो है वो आप तीसरे लोकेशन पे करोगे, चौथा लोकेशन का जो डेटा है वो चौथे पे करोगे, पांचवा का पांचवे पे करोगे, छठे का छठे पे करोगे, राइट? इज दैट क्लियर? Yes sir. So you can copy the data from one place to another. Fine. Do you do that? Yes, you do that on your daily basis. आप एक गाना ट्रांसफर करते हो या मूवी ट्रांसफर करते हो, you're basically copying that song or a movie from one place to another, right? Right? Yes sir. Yes sir. So that copying of the data can be done in two ways. Either आप ऊपर से नीचे डेटा को कॉपी कर सकते हो या आप नीचे से ऊपर को डेटा को कॉपी कर सकते हो. You can transfer the first byte from first location to second location, or you can transfer the last byte from first location to second location. Is that clear? Yes sir. So in that case अगर आप टॉप टू बॉटम में जा रहे हो, यानी अगर आप पहला बाइट का आप पहले लोकेशन में डाल रहे हो, दूसरा बाइट दूसरे लोकेशन में डाल रहे हो, तीसरा बाइट तीसरे लोकेशन में डाल रहे हो, if you are going from top to bottom, in that case the direction flag should be made as 0. Okay, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नीचे से कॉपी करना चाहूंगा, in that case you need to make the content of direction flag as 1. Is that clear?
Yes, sir. Which is better? Top to bottom copying or bottom to top is better? Which is better? Top to bottom. Top to bottom. Okay. Who is a good batsman? A lefty batsman or a righty batsman? Righty. You cannot decide that. It depends. It depends on the situation actually. It doesn't depend on the situation, depends on the programmer, how that programmer feels like. अगर उसको लगता है कि राइट ही मेरे लिए अच्छा है तो वो राइट से बैट्समैन बैटिंग करेगा, अगर उसको लगेगा वो लेफ्टी अच्छा है तो लेफ्ट से बैटिंग करेगा, जस्ट लाइक दैट. अगर प्रोग्रामर को लगता है कि उसको कॉपी ऊपर से नीचे करना है तो वो ऊपर से नीचे कॉपी कर सकता है, वो नीचे से अगर ऊपर करना चाहता है वो नीचे से ऊपर कर सकता है. डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंसेस. Okay, it doesn't give you any performance, but it is as per your choice. So DF gives you a choice. You can copy the data from top to bottom or bottom to up. Nothing is better. It depends completely on the preferences. Is that clear? Yes, sir. Yeah. So I'll just erase this so that मेरे पास जगह बन जाए. I hope you got the idea. DF का क्या है content. So if DF is equal to 0, then the data is copied from where to where? Top to bottom. Top to bottom. And if DF is equal to 0, then data is Vice copied versa. vice versa, which is from bottom to top. Is this clear? You can Yes, write down sir. in note. You can write down in note. It depends on preferences. It depends on preferences यानी choice. It depends on the programmer choice. प्रोग्रामर को लगता है उसके उसके हिसाब से नीचे से कॉपी करेगा ऊपर, तो आपका उसका उसके उसका सुपरस्टिशन ऐसा भी हो सकता है दैट ही विल फील लाइक कि वो कॉपिंग ज़्यादा अच्छे से होगा. So it depends on superstition, it depends on multiple other factors. So it depends. So DF एक flag है जो आपको allow करता है to copy wherever you feel like. Okay, so it supports on the program. It depends on the programmer's preferences or choice. Is that clear? Sir, Yes. तो इसमें अगर बाय चांस प्रोग्रामर को कोई ऐसी डेटा कॉपी करनी है जो कि बीच में हो या समवेयर इन द मिडिल, तो दैट कैन बी डन, राइट? That can be done. That can be done. सर लेकिन बट आपको व्हाट जैसे अगर आपको DF डेटा जैसे आपको डेटा यहाँ से समझ लो ये पूरी मेमोरी है, उस मेमोरी में से सिर्फ इतना डेटा आपको कॉपी करना, राइट? राइट. यस सर. और इतना डेटा आपको ट्रांसफर करना है यहाँ पे, ये मेमोरी के अंदर इतना डेटा आपको यहाँ पे से उठा के यहाँ पे डालना है. दैट कैन बी डन. अगेन ये कॉपिंग आप कैसे कर रहे हो, ऊपर से या नीचे से ऊपर? डेटा बीच में से करो या कहीं से भी करो, कॉपी आपको मल्टीपल बाइट्स करना है. वो बाइट्स आप ऊपर से नीचे ट्रांसफर करना, कॉपी करना चाह रहे हो या नीचे से ऊपर ट्रांसफर करना चाह रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. So basically, it is not for a single data. It is somewhat Yes, it is for multiple specific data. It amount is, of data and that is why it is generally used in only in string instructions. यहाँ पे आप multiple data के साथ deal कर रहे हो. Okay, sir, got it. Yes, sir. So ये आप multiple, क्योंकि आपको कॉपी करना है, वो कॉपी जनरली मल्टीपल चीज़ों को ही करोगे. अगर सिंगल करोगे तो आप नीचे से करो या ऊपर से करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. लेकिन अगर आपके पास दो से ज़्यादा बाइट है, वो कॉपी अगर आपको करना है तो पहले आप एक बाइट ऊपर वाली कॉपी कर सकते हो या दूसरी बाइट आप नीचे वाली कर सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस. इफ यू फील लाइक कि अगर आपको पहले नीचे वाली कॉपी करनी है उसके बाद ऊपर वाली करनी है, तब आपको DF फ्लैग 1 बनाना पड़ेगा. अगर आपको लगता है नहीं ऊपर वाला पहले कॉपी होगा फिर नीचे वाला कॉपी होगा, तो डिपेंड्स ऑन योर चॉइस. उस केस में आपको DF 0 बनाना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yeah, so that is the complete answer for your flag register. So what should be written down? अगर सवाल पूछा गया, what is the question they generally ask? What is flag register? Draw and explain with the help of an example. So आपको ऐसा कुछ करना, ऐसा कुछ सवाल आएगा, या explain the flag register of 8086. Yeah, with the help of neat label diagram, explain the working of flag register. So that is how the question will be. If that question comes, you need to start from what is flag register. So what is a flag register? It is nothing but it is a register which holds the status of the result. Okay, that is the whole purpose of a flag register. Okay, because 8086 is a 16-bit processor, naturally all the register has to be a 16-bit register, right? Right? Yes. Yes, sir. So that is why a flag register is also a 16-bit register. Okay, then you need to draw this particular diagram. From this diagram, you need to say कि ये 16-bit flag register में से how many are active and how many are inactive? 9 are active. 9 are Nine are active and active, 7 are in. 7 are inactive.
from these 9 active flags, 6 flags basically shows the status. The remaining 3 flags generally shows the control flags. So what are the 6 status flags? So first we have something called as carry flag. So what is carry flag? The content of carry flag will be made as 1 if the result is generated, or if the from the MSB a carry is generated. Okay, so in that case CF will be made as 1. The content of CF is made as 0 if there is no carry generated out of the MSB. Is that clear? Yes, sir. Yes sir. Okay. Then Sir, next is yes. छोटा सा कंफ्यूजन है, ये Yes. जो भी आपने डायग्राम बनाया, ये 23 वाला जो आपने एड अप किया, तो नीचे नीचे Okay. वही Okay. Okay. तो, हाँ हाँ. तो यहाँ पर अगर 1 कैरी हुआ तो दैट इज ऑक्सिलरी, नॉट अ परफेक्ट कैरी, राइट? Yes. 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 अगर नेक्स्ट वाले 4 बिट में कोई Yes. कैरी होता Yes. है. Exactly. Okay. Exactly. Okay. Yeah. Next is something which is called as parity flag. The parity flag will be made as 1 if the result has even number of ones. Parity flag will be made as 0 if the result has odd number of zeros. Okay. Then we have something called as auxiliary carry flag. The content of auxiliary carry flag will be made as 1 if the carry is generated out of the lower nibble to the higher nibble. यानी lower 4 bits से, यानी from bit number 4 to bit number 5 अगर carry generate हो रहा है, in that case auxiliary carry flag will be made as 1. And if there is no carry generated from the lower nibble to the higher nibble, in that case the auxiliary carry flag will be made as 0. Then we have something called as 0 flag. So if the result is 0, in that case 0 flag will be made as 1. If the result is non-zero, in that case the 0 flag will be made as 0. Sign flag, it simply copies the MSB. So if the MSB of the result is 0, the sign flag is 0. If the MSB of the sign flag is 1, in that case the sign flag will be made as 1. Okay. Lastly, we have something called as overflow flag. Overflow flag is nothing but if the result is outside the range of the range specified, in that case the result is overflown. Since the result is overflown, the overflow flag will be made as 1. Okay. If the result is within the range, in that case the result is not overflown. Since the result is not overflown, the overflow flag will be made as 0. Looking at the overflow flag and sign flag, you can conclude the sign of the number. Okay. So in that case, first check the condition of overflow flag. If the overflow flag is 1, then sign flag is telling false. So whatever sign flag tells you, which is if SF is equal to 0, which means the sign should be positive, but it is not positive, it is negative. Okay. And if sign flag is 1, which means the number is negative, in that case the number is not negative, but it is positive because overflow flag is 1. Is that clear? And if overflow flag is 0, in that case whatever sign flag is telling you, it is telling the truth. Okay. So if sign flag is 0, that means the number is positive, and if sign flag is equal to 1, that means the sign flag is negative. Then after that we have something which is called as control flag. Control flag तीन तरीके के होते हैं. पहला trap flag होता है. If the content of trap flag is made as 1, who makes it? The programmer makes it. Okay. So if programmer change the content of TF flag as 1, in that case the execution won't happen in a single go, but it will execute each line at a time. Okay. And if you want to execute all the program in a single go, in that case the TF flag should be made as 0. So wherever you require a debugging to happen, in that case TF flag आपको 1 बनाना पड़ेगा. If you want to execute the whole program in a single go, make the content of TF flag as 0. Then there is an interrupt flag. The content of interrupt flag, if it is made as 0, in that case the interrupt is enabled. If the content of interrupt flag is made as 1, in that case it is completely disabled. Okay. Is that clear? Yes. I think I have written wrong. Interrupt flag, if it is made as 0, it means it is disabled. My bad. Okay. Kindly change it. Okay. Kindly change it. Okay. And if it is made as 1, it means it is enabled. मैंने उल्टा बोल दिया गलती से. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Okay, so kindly अगर आप लिख रहे हो कहीं तो kindly note it down. IF is made as 0, it means you are disabling the interrupt. IF flag is made you are making as 1, that means you are enabling the interrupt. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Yes sir. Last flag is something which is called as direction flag. The content of direction flag will be made as 0. If it is made as 0, in that case the copying of the data will happen from top to bottom. And if the direction flag is made as 1, in that case you're copying data from bottom to top. Okay, so generally the direction flag are generally used somewhere as per the programmer preferences or choices. So whichever feel the programmer feels like, they can use their respective
way of copying the data. So that's it. That's the different types of flag register that we have, different types of flag bits that we have in the flag register. Is that clear? Anybody has any doubt so far? No. Anybody has a doubt? Okay. So you can take a break of 10 minutes. Okay. After 10 minutes, join in the lab session. Okay. अगला जो lecture है आपका lab session. We'll be finishing up with the addressing mode, which is the next topic which we'll be discussing, and we'll wrap up the addressing mode by today itself, and we'll be finishing up with our first module. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. So take a break. Yes, sir. Take a break of 10 minutes and join at sharp 2:30. Okay. So from 2:30 onwards, we'll be taking the entire lecture of 2 hours. Okay. So I want everybody to be present. I'll take the attendance for this particular session. So kindly stay in the meet.